शादिर हियर। आज हम गाड़ी से वीडियो बना रहे हैं बिकॉज वेल सर्कमस्टांसेस। यार हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग। दिस इज सच अ टफ बुक टू रिव्यू। दिस इज ऑलरेडी द सेकंड टेक ऑफ दिस वीडियो प्राइमरली बिकॉज इट्स अ फिक्शन बुक. The issue with fiction books is you cannot summarize them and you cannot just do justice to the story by saying कि सुनो ये इसका पल्प है, ये तुम कर ही नहीं सकते. But because this is a fiction book that has philosophical asides, the good thing is we can talk about the themes in this book. If you are a fan of fiction, अगर तुम्हें fiction पढ़ना पसंद है, कहानियाँ पढ़ना पसंद है, and you hope कि काश इसके अंदर कुछ philosophical explanation भी होती कि ये क्यों हुआ या मैं इस किरदार की साइकी में झांक पाता, तो ये किताब तुम्हारे लिए बिल्कुल है. It's written by Czechoslovakian author Milan Kundera. नाम हिंदी लगता है पर है नहीं. चेक का he's a Czechoslovakian Jew. तो अपार्ट फ्रॉम द वेरी माइनर चेकोस्लोवाकियन हिस्ट्री दैट यू विटनेस, क्योंकि इस किताब के अंदर इट्स सेट इन द टाइम्स आई थिंक लेट 80s में या 70s के अंदर व्हेन द रशियंस आर इन्वेडिंग चेकोस्लोवाकिया, यू गेट इसके अलावा द प्राइमरी मोडस ऑपरेंडी ऑफ द बुक इज अबाउट लव, इनफिडेलिटी, द क्रशिंग वेट ऑफ बीइंग एंड हाउ पीपल डील विद इट. ये फंडामेंटल ऐसे कुछ थीम्स उभर के आते हैं. 4 किरदार है इसके अंदर, तोमास, तेरेसा, फ्रांज और सबीना. तोमास का सीन ये है, तोमास है एक डॉक्टर के साथ साथ वो है एक सीरियल वुमनाइजर. कई सारी औरतों के साथ वो सोता है, उसका ये सीन होता है. टेरेसा इज ए हेल्पलेस वेट्रेस जिसको केवल एक मेटाफोर के माध्यम से, एक दिन टोमास को एक मेटाफोर आता है मन में कि वो ऐसे बास्केट में आई, उस दिन ऐसा दिन था और उस दिन अगर ये डॉक्टर ना आता और मैं आ जाता तो ऐसा होता. बेसिकली टोमास क्या करता है, टोमास सोचता है एक परफेक्ट स्टोरी थी जिसकी वजह से ये बंदी मेरी जिंदगी में आई, इसलिए सही है, इसलिए वो उससे शादी कर लेता है. टेरेसा के अपने अलग इश्यूज हैं. उसकी माँ ने शुरुआत से उसको ये फील कराया कि उसकी शरीर इतना अट्रैक्टिव नहीं है, हालांकि वो बहुत खूबसूरत है. तो शी इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ हर नेकेडनेस एंड शी इज़ हेल्पलेस एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टोमास. ऑन द अदर हैंड सबीना इस तरह की है जैसे एक आर्टिस्टिक ओपन माइंडेड सोल जिसका पूरा ये है, व्हेन एवर लव बिकम्स टू सीरियस फॉर हर शी फ्लीज टू अ डिफरेंट कंट्री, शी स्ट्रेज अवे फ्रॉम कमिटमेंट्स. फ्रांस ऑन द अदर हैंड इज एग्जैक्टली द आइडलिस्ट. वो सबीना से प्यार करता है, उसे ये नहीं पता कि ये बंदी कमिट नहीं करेगी. ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑब्सेसिवली इन लव विद हर, राइट. ये तो हो गए किरदार. इसमें बढ़िया बात क्या है, देयर आर सो मेनी कोट्स इन दिस बुक, इनफैक्ट आई लाइक टू रीड अ बंच दैट शोकेस तुम किस लेवल की फिलोसॉफिकल डेप्थ से डील कर रहे हो. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक यू डोंट हैव टू थिंक ओ माय गॉड इतना सारा नीचे. आई कैन नॉट रीड अ लॉट ऑफ नीचे बिकॉज इट्स वेरी ड्राई एकेडमिक स्टाइल का. यहाँ पे कहानी एंड देन देयर आर दीज ब्यूटीफुल कोट्स. देयर इज वन, द ब्रेन अपीयर्स टू possess a special area which we might call poetic memory and which records everything that charms or touches us, that makes our lives beautiful. Love begins with a metaphor, which is to say, love begins at the point when a woman enters her first word into her poetic memory. जब मैंने ये पढ़ा था मेरी फट के चार हो गई थी. Why? Because maybe we don't look at the nature of human existence like this, but we are constantly telling ourselves, apart from the narrative that governs our life, we're constantly telling ourselves metaphors. ये इसलिए हुआ because X, ये इसलिए हुआ because look before you leap, ये इसलिए हुआ because Y, right? And which is why the author warns us, love can be a very dangerous task, especially when you look at it poetically. But this is one of the several themes. The other thing that the author points out is the dilemma of being an author itself. He says, I will never have the courage to be these characters, to take these bold choices, to move to a different country because of the woman you love, or to completely abandon the guy you could potentially have loved but you're too scared of commitment. But I'm willing to write them out because I cannot live their lives. तो ये तरीका होता है किरदारों से अपनी जिंदगी को जीने का, अपनी unlived जिंदगी को जीने का. ठीक है, the many forms of you that could have existed in parallel realities or even in this reality. But क्योंकि समय कम है, जिंदगी छोटी है, you end up fictionalizing them or extrapolating them in books like this. The other thing to point out in this book is this is mandatory reading in a lot of acting schools, and the reason for that is कि एक तरफ चल रहे होते हैं तुम्हारे इवेंट्स किताब के कि आज उससे इस तरह मिला, फिर ये हुआ और उसकी जॉब चली गई. दूसरी तरफ तुम्हारा चल रहा होता है at the end the breakdown of what happened. So as actors you can learn about the events of the story, so you understand what is your specific role in the context of the entire story. And then when the author breaks it down कि लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक ह्यूमन ट्रूथ एंड ब्रेक इट डाउन, और 2 पेज उस पर लिखते हैं, यू गेट टू अंडरस्टैंड मेरे कैरेक्टर की साइकी क्या है. फॉर मेथड एक्टर्स इन पर्टिकुलर दिस इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट्स नॉट ओनली इनफ टू नो कि मेरे को अब ये करना है, मेरे को टेबल से पेन उठाना है, पेन उठा के उससे कुछ लिखना है और किसी का खून करना है. नहीं, ये भी जानना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और उसका क्या अतीत है, राइट. विच इज़ वाई वी कम ऑल द वे बैक टू द प्रेमाइस ऑन विच दिस बुक इज बेस्ड, कॉल्ड नीचे's एटर्नल रिटर्न. अगर आप में से किसी ने भी फ्रेडरिक नीचे फिलोसफर है, जर्मन फिलोसफर, उसकी किताबें पढ़ी होंगी, one idea that he often proposes is that things happen again and again and will continue to happen for eternity. But a simple idea, right? But this is what puzzles the author. So he takes that as a premise of the book and carries it out.
हम बार बार अपने किरदारों की घटनाओं में देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ जो बचपन में हुई थी या एक पैटर्न जो पहले सेट हो गया था वो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, where the characters either interweave that into their own fantasies and say वाह मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, or they try to resist against it and fail. Fundamentally, what the book demands of us is to ask ourselves this question: should we be crushed by the burden of living, but then have value, have reality, have truth, have earthy qualities in her because हमने कुछ tangible हासिल कर लिया, or do we abandon the weight of living and become a flighty creature, run away from commitments and be as light as air but also as insignificant? Very interesting चीज़ है. I wrote a tweet about this, that life is essentially a struggle between being Icarus, flying close to the sun, you can get burned, or being like Atlas, forced to carry the world on his shoulders. And I mean, this is sort of like in the Petersonian territory, but the idea is this is the question we're always facing. Do we take on the responsibility, the problems associated with living, and become tangible, earthy, mortal, but also with substance, or do we fly away? This is The Unbearable Lightness of Being by Milan Kundera. I hope you like it. I certainly recommend you buy it. It's good reading, it's advanced reading for anyone looking to have a good mix of fiction and non-fiction at the same time. ठीक है? This is all from my end. Shout it out. Don't forget to like, share and subscribe. और अगर ये रिव्यू बढ़िया लगा, समरीज भी आ रही हैं, रिव्यूज भी आएंगे, मेरे को बता दो कमेंट्स में क्या बढ़िया लगा. विल मेक मोर ऑफ दोस. ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.